Assalamu alaikum students. I hope all of you are fine. I am from DAR-E-ARQAM School Banigala campus. This is your English class, lecture number 1, and the topic of our lecture is kinds of adverb. Okay student, open your workbook, English workbook, page number 34. There is a topic, kinds of adverb. Okay. First of all, I want to tell you about the verb. So you know very well what is a verb. A verb is a word that shows action. Okay. So adverb जो है, adverb tell us more about a verb. Okay. It tell us more about a verb. For example, if you say that I am walking, ठीक है, I am walking is a verb. So how you walking, when you walk, आप कब चली, ठीक है, I walk in the morning. ओके, तो इन द मॉर्निंग टाइम, ठीक है, वेयर आई वॉकड इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock. ठीक है, तो वेयर, ठीक है, वेयर इन द पार्क. और हाउ मीन्स कैसे. आई वॉक स्लोली, आई वॉक क्विकली, आई वॉक फास्टली. तो ये सारे क्विकली, फास्टली, स्लोली, ये सारे क्या होंगे, एडवर्ब. सो जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि नाउन जो है, नाउन, व्हाट इज़ अ नाउन, नाउन को जो डिस्क्राइब कर रहे हैं वो है एडजेक्टिव. एडजेक्टिव टेल अस मोर अबाउट अ नाउन. सो सिमिलरली एन एडवर्ब tells us more about a verb. Okay, so here is the definition of adverb. Adverbs are words that tell when, where or how. Okay, so repeat with me. Adverbs are words that tell when, where or how. Okay, you have to write this definition in these blank places. Okay, so there are 3 kinds of adverb we learn in this topic. So first is adverbs of time. First kind of adverb is adverbs of time. Adverbs of time tell when. So adverbs of time tell when. Repeat with me. Adverbs of time tell when. For example, the train left yesterday. So left is a verb. Left is a verb. So when train left, the train left yesterday. So yesterday is a adverb of टाइम. yesterday is an adverb of time. yesterday time मतलब जिसमें हमें कोई टाइम का आइडिया दिया जाए कि कब ये एक्शन हुआ, कब ये एक्शन जो है उसने टेक प्लेस किया, तो वो हमें वो कौन सा एडवर्ब होता है, एडवर्ब्स ऑफ टाइम. जैसे yesterday is an adverb of time. it tells when the train left. मीन्स, ठीक है, कि ट्रेन कब लेफ्ट हुई, ट्रेन कब गई, तो इसका मतलब कब कौन हमें बता रहा है, येस्टरडे. तो येस्टरडे क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम. ओके, नेक्स्ट इज एडवर्ब्स ऑफ प्लेस टेल वेयर. एडवर्ब्स ऑफ प्लेस टेल वेयर. प्लेस मीन वेयर, जगह, वेयर. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द गर्ल वॉक्ड अवे. The girl walked away. Walked is a verb. Where he walked? Away. So away is an adverb of place. It tells where the girl walked. ठीक है, अब ये किस तरह से एडवर्ब है, क्योंकि हमें बता रहा है कि गर्ल कहाँ गई. ठीक है, तो कहाँ वॉक, वेयर शी वॉक्ड अवे. सो शी वॉक्ड अवे. सो अवे इज अ एडवर्ब ऑफ प्लेस. ओके, adverb of manner tell how. that how, ठीक है, adverbs of manner tell how. example, the boy walked quickly. how the boy walked quickly, तेजी से. quickly is an adverb of manner. it tells how the boy walked. understand? सो रिपीट आफ्टर मी कि क्या कौन कौन किसी काइंड्स हमने पढ़ी एडवर्ब की. एडवर्ब ऑफ टाइम. एडवर्ब ऑफ टाइम हमें क्या बता रहा है कि व्हेन. ओके, व्हेन, टाइम, येस्टरडे, टुमारो, टुडे. ये अगर आप कोई टाइम लिख रहे हैं तो वो भी इसमें एडवर्ब में आएगा. ठीक, एडवर्ब ऑफ टाइम में. एडवर्ब ऑफ प्लेस वेयर, किसी जगह. वॉक्ड अवे, ठीक है, या फिर आप कहते हैं किसी जगह का भी आप जिक्र करते हैं उसमें, तो वो क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा. ठीक है,
मैनर्स जो होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर्स मीन हाउ, ठीक है, हाउ मीन कैसे, क्या। अब जैसे यहाँ पे बॉय वॉकड क्विकली है, तो बॉय कैसे चल रहा है, कैसे चला था वो, तो क्विकली, क्विकली क्या हो जाएगा फिर, एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाएगा। ओके, अंडरस्टैंड। तो आपने ये सारी जो डेफिनेशंस हैं, ये जो आपको ब्लैंक यहाँ पे स्पेसेस दी गई हैं, लाइंस, यहाँ पे आपने पहले एडवर्ब की लिखनी है, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड देन एडवर्ब ऑफ मैनर की डेफिनेशन लिखनी है। ओके Okay students, on next page, page number 35, mention date and day. So write each adverb from the box in the correct column. There are 3 columns. Adverb of manner means how, adverbs of time mean when, adverbs of place mean where. ठीक है, और नीचे यहाँ पे एक आपके पास बॉक्स है आपकी बुक पे, जिधर सारे यहाँ पे एडवर्ब्स दिए गए हैं। ठीक है, यू हैव टू चूज़ फ्रॉम द बॉक्स एडवर्ब्स ऑफ टाइम, मैनर एंड प्लेस, ठीक है, एंड देन राइट इन द respected column. Okay, first of all, later, later, what is later, later, देर से, तो it's a adverb of manner, no, it's adverb of time, yes, ठीक है, so you write later in the adverbs of time column. Okay, the second word is quickly, quickly, so अभी आपने पीछे भी इस एग्जाम्पल में भी पढ़ा, तो quickly is a adverb of manner, so you write in the column of adverbs of manner. Okay, the next word is gently, so gently is also adverb of manner, very good. So often, अक्सर, अक्सर होता है ऐसा, ठीक है, often, तो often is a adverb of time, very good. Yesterday, yesterday is also adverb of time. In, so in is the adverb of place. Okay, in is adverb of place. Suspiciously, suspiciously is the adverb of manner. Tidily, tidily is the adverb of manner. Out, out is an adverb of place. Okay, inside, inside is also adverb of place. Okay, afterwards, uske baad, is an adverb of time, very good. Now, now is also an adverb of time. Bravely, bravely is an adverb of manners, very good, ठीक है. Everywhere, everywhere is also an adverb of place, very good, ठीक है. Sweetly, now guess, sweetly is an adverb of manner, very good. Next, next is an adverb of when, time, very good. Okay, then is also an adverb of time. Okay, here, here is an adverb of place. There is also an adverb of place. Deeply, adverb of manner. Finally, adverb of manner. Always is an adverb of time, very good. Carefully, carefully is an adverb of manner. Up is an adverb of place. Okay, so you have to choose a word from this box and write in the respected column. This is your homework. Do this work on workbook, English workbook page number 34 and 35, and send me the pictures. Thank you so much. Allah Hafiz.